हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। दिस इज सागर भट्ट। इस वीडियो में एज यूजुअल पहले हम निफ्टी एनालाइज करेंगे, उसके बाद और सेक्टर्स एनालाइज करेंगे एंड फाइनली मैं आपके साथ दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो आप अपने ट्रेडिंग वॉचलिस्ट पे ऐड कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप देख सकते हो निफ्टी वाज बेयरिश लास्ट वीक एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम जाते हैं देन यू कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी हैज ब्रोकन अ गुड सपोर्ट रीजन हियर एंड नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। मेजरली अब अगर आप देखोगे द ट्रेंड इज स्टिल इन अपवर्ड्स, राइट, बट अभी निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। सेम टाइम अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात करना जा रहे हैं देन यू कैन सी द डाउ जोन्स इंडेक्स हैज ऑलरेडी ब्रोकन द 200 मूविंग एवरेज एंड कमिंग टू द S&P 500 इट हैज अप्रोच्ड इट 200 मूविंग एवरेज। सो ये भी सिमिलर है। सो जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हो द डाउ जोन्स इंडेक्स हैज ब्रोकन the 200 moving average in its history only during extreme fear like the corona crisis. This was the first time and आप देख सकते हो during the 2008 crisis and also during the dot-com bubble and अगर हम हिस्ट्री देखते हैं way before you can see Dow Jones Index had broken the 200 moving average in 1966 and you can see this was only when the market was in sideways motion for 20 years. And in recent times Dow Jones Index ने other than the huge panic it hasn't broken the 200 moving average. So now let's see what is going to happen now. Next week एक बहुत important week है. If the market doesn't sustain at this level then we might enter a sideways trend. Talking about other sectors आप देख सकते हो if we go to Nifty Bank situation similar है. Bank Nifty is also facing rejection from all time high and if I go to small caps and I don't think small caps has recovered. It tried to recover but now it's again getting back and the best sector as of now is of course the FMCG, right? So FMCG sector is booming right now and again the worst performing sector is the IT. तो आप देख सकते हो IT सेक्टर हैज ऑलमोस्ट अप्रोच्ड इट्स 200 मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म सपोर्ट. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, राइट. इन्वेस्टर्स को भी एंट्री मिलेगा, ट्रेडर्स के भी एंट्री मिलेगा एंड दिस इज अ गुड थिंग. सो इन द करेंट मार्केट सिचुएशन अदर देन IT no other sector is actually giving an entry, right. All the stocks are near their all time highs or not at very good levels. So the first stock that looks interesting is the Infosys as usual. हमने लास्ट वीक भी बात किया था and even now it's the stock that's looking interesting and even now हम वेट कर रहे हैं for it to come to the 200 moving average. आप देख सकते हो 200 moving average is a pretty good support for Infosys and अगर वो इस लेवल पे आता है then as positional and swing traders we can easily take a position here and you can either keep a stop loss or you can just keep it open and your target can be the minimum all time highs. So आप देख सकते हो your minimum target will be almost 60%, right, which is a pretty decent target and most importantly आप देख सकते हो you are buying when the stock is down by almost 37%, right. So that's the first stock. The second stock is the TCS. तो अगर आप TCS देखते हो then just like Infosys TCS also respects the 200 moving average and आप देख सकते हो how beautifully it respects the 200 moving average and it goes up. So even now TCS is approaching its 200 moving average and अगर इस levels पे आता है then you take your entry here and no don't keep any stop loss and your target can be the all time highs and again आप देख सकते हो you are getting a target of 40%. More importantly you are buying the stock when it's down by almost 30%, right. So these are the two stocks that looks interesting to me as of now. अगर आप दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो then you can also enter in other IT stocks like Wipro में भी आप एंट्री ले सकते हो. यू कैन सी इट हैज रीच्ड इट्स लेवल्स ऑफ ऑलरेडी स्टॉक में एंट्रीज ले सकते हो एंड फाइनली यू कैन आल्सो टेक सम एंट्रीज इन टेक महिंद्रा. सो ओवरऑल IT सेक्टर अभी एक डिस्काउंट पे है एंड यू कैन लुक फॉर बाइंग. सो दीज आर द स्टॉक्स दैट लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी. कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन से स्टॉक्स वॉच आउट कर रहे हो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.